बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन इस नॉइज़ पोल्यूशन को मैंने दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। एक पहले में हम देखेंगे व्हाट इज़ नॉइज़ एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ नॉइज़, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन and its causes। तो दूसरे सेगमेंट में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ दिस नॉइज पोल्यूशन एंड द कंट्रोल ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। सो नॉइज पोल्यूशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इट इज़ ए टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू क्लास 12th EVS सब्जेक्ट। तो first we must know what is a noise. Basically this noise, it has been derived from a Latin word nausea, which means unpleasant. Nausea, N-U-A-U-S, N-A-U-S, S-E-A, nausea, which means unpleasant. So noise क्या होते हैं? अगर sound low होगी and pleasant होगी, then it is harmless. When the sound is loud and unpleasant or undesirable and is harmful, then this sound becomes the noise. A same sound may be a noise for a one person and it may be a music for the another person. So it depends upon the rhythm, duration and the mode of a person. And sometimes we can say noise is a wrong sound in a wrong place at the wrong time. Wrong sound at the wrong place in the wrong at the wrong time. इसको भी हम नॉइज कहते हैं। किसी वक्त हम नॉइज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉइज unpleasant sound or annoying sound which is having intensity above 80 decibels। 80 decibels के ऊपर से जिस साउंड की इंटेंसिटी होगी, तो that is annoying and that will be called the noise. So this is about the what is noise, how we can define the noise or what is the noise. Now this sound basically जो frequency of sound, it is also measured in the hertz. The frequency of the sound, it is measured in hertz. And अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में जो ऑडियबल रेंज है, ये किस साउंड से कहाँ किस रेंज में सुन पाएंगे, उसको हम कहेंगे ह्यूमन ऑडिबल रेंज। ह्यूमन बींग्स में ऑडिबल जो रेंज है ना, जो ह्यूमन ईयर का ऑडिबल रेंज है, दैट रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, जिसको कहते हैं ह्यूमन ऑडिबल रेंज। अगर साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे आ जाएगी, इसको हम कहेंगे इंफ्रासाउंड। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 किलो हर्ट्ज है और 20,000 हर्ट्ज होगी, तो इसको हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड। वो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट इज द ह्यूमन ऑडिबल रेंज। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे ह्यूमन ऑडिबल रेंज, अब हमने देखा कितना होगा। नाउ द इंटेंसिटी और लाउडनेस of sound or intensity. Loudness of sound or the intensity of the sound is measured
in decibels. Now, the decibel basically it is the unit of the intensity of the loudness or this intensity of the sound. मतलब उस loudness of the sound का जो unit है that is measured in the decibels. अगर चूंकि it is a logarithmic unit, अगर हम कहेंगे अगर below मतलब जो हियरिंग लिमिट से नीचे जो आएगा इसकी जो इंटेंसिटी होगी 0 डेसिबल होगी. लेकिन इफ इट विल गेट इंक्रीज 10 folds it will become 10 decibels. When it become 100 folds increase, that means 10 raised to power 2 it is 20 decibel. इसी तरह 10 raised to power 3 it is 30 dB decibel, and so on, and 10 raised to power 4 it is 40 decibel. It depends how many times this level of this sound gets increased, the folds, the number of times it gets increased, it is described in these decibels. So that is regarding its units. If we will talk about the certain sources of the sound and the and their intensity, suppose अगर हम बात करेंगे, अगर हम ब्रीथिंग में देखेंगे इसकी इंटेंसिटी क्या होती है 30 डेसिबल. ऐसी तरह अगर हम देखेंगे जो विस्परिंग हम करते हैं ना उसमें 60 डेसिबल उसकी इंटेंसिटी होते हैं. इसी तरह अगर हम कहेंगे ना ये कन्वर्सेशन अगर होगी मतलब जो ये मीडियम कन्वर्सेशन अगर हम करेंगे तो उसके होते हैं 70 डेसिबल्स. अगर हम कहेंगे मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी तो उसकी इंटेंसिटी होगी 80 डेसिबल. अगर हम बात करेंगे जो कि वो हॉर्नस मतलब जो हम हॉर्न जो इस्तेमाल करते हैं ना प्रेशर हॉर्नस, तो उनकी या हूटिंग हॉर्नस में इनकी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड और नॉइज इज देयर 120 डेसिबल्स. इसी तरह जब ये लैंड ऑफ करता है कोई मतलब ये जेट उस वक्त उसकी इंटेंसिटी होती है 150 डेसिबल्स. इसी तरह अगर हम बात करेंगे दिस रॉकेट की, इसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है 180 decibels, and so on and so forth. So far as the Indian metropolitan cities are concerned, यहाँ पे sound की intensity होती है and that varies between 80 and 90 decibels. Well, this is regarding the intensity. Well, intensity of sound it's measured in the decibels. So another point about which before we will go towards the sources or the causes of the noise pollution, तो इसका एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा है. उसको कहते हैं सोनिक बूम. सोनिक बूम किसको कहते हैं? It is a phenomenon which is related with this very sound or the noise. Basically क्या होता है? It is a series of shock waves which are produced by the supersonic jets. The jets which is having the speed more than the speed of the sound. तो वहाँ पे जो वो शॉक वेव्स रिलीज होते हैं दे वहाँ उसको हम कहते हैं ना उस सीरीज ऑफ शॉक वेव उसको हम कहते हैं सोनिक बूम. इट इज दिस सोनिक बूम इट हैज वेरियस harmful effects upon the human beings. Suppose this sonic boom it always causes the rattling of the windows and the doors of the buildings. It may also cause the cracks in the buildings. It may also create the stalling reactions in the human beings. वहाँ पे then the so these are the various effects of this sonic boom. So this is very dangerous, and these sounds they are of high intensity. They are produced by these supersonic jets. Now this was regarding what is noise and some associated terms with it. Now what is a noise pollution? Basically in noise pollution इसको हम कैसे define करेंगे? A persistent, often excessive and high and disturbing
level of noise, यानी कि persistent noise which is often excessive and the disturbing level, जो noise की मतलब अगर हम देखेंगे noise जब इसकी level ज़्यादा हो जाएंगे and that will be disturbing and which will be considered as a harmful factor in a given environment, it constitutes the noise pollution. So noise pollution, it is the pollution which is caused by the noise which is released in its excessive amount, which is released in its excessive amount and is always disturbing and has harmful effect on the environment or upon the human beings, that will be called the noise pollution. So this noise pollution, now इस noise pollution कैसे, मतलब इसके sources क्या है, what are the causes of the noise pollution, what are the various sources from which this noise from which the noise is released or it is added into the environment or it is मतलब it is added in our environment. इसके कुछ मतलब sources के बारे में हम बात करेंगे, कहाँ से ये sound release होती है. तो अगर हम बात करेंगे sources, basically जो natural sources of noise, they are there are no such natural resources which produces the noise which may cause the noise pollution. Sometimes these thundering of thundering during clouding, they may produce the sound noise a bit, but here the sources of the noise are purely the man-made, and this too is a new phenomenon. This too is a new phenomena. Initially there were not so many sources of the noise pollution, but nowadays there are a lot of sources which are releasing, which are adding this unwanted sound into our environment. Let us talk about a few among them. तो कुछ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम ट्रांसपोर्ट, एक सोर्स है ट्रांसपोर्ट व्हीकल. जो मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, व्हीकल्स ज़्यादा होती हैं. दे प्रोड्यूस द साउंड्स देयर एंड देयर बाय दे डिस्टर्बिंग the human beings which are living there. They are getting disturbed by this unwanted sound which are produced there. मतलब वहाँ पे ट्रक्स होते हैं, these trains होते हैं, cars होते हैं, scooters होते हैं. इसी तरह ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये भी एक सोर्स साउंड का बनते हैं, पर्टिकुलर इन सिटीज एंड द टाउन्स मोस्ट ऑफ. तो इसी तरह अगर हम दूसरे सोर्स की बात करेंगे, डोमेस्टिक गैजेट्स. डोमेस्टिक डोमेस्टिक गैजेट्स डोमेस्टिक जो गैजेट्स होते हैं, that is used in our domestic, that gadgets, the articles, that artifacts which are used in our domestic life, they may also produce the sound. Like we use the refrigerators, these washing machines and the grinders and mixers, they are all producing the sound. They are also all producing the noise. So this also acts one of the sources of this noise pollution. तीसरा अगर हम बात करेंगे पर्सनल एंटरटेनमेंट, पर्सनल एंटरटेनमेंट में जो हम गैजेट इस्तेमाल करते हैं, लाइक टीवी, ट्रांजिस्टर्स, तो कैसेट रिकॉर्डर्स, वो भी ऐड करते हैं नॉइज इन आवर एनवायरनमेंट. इसी तरह अगर हम देखेंगे फंक्शन, हाँ कुछ मतलब जो कोई सोशल फंक्शनिंग होती हैं, रिलीजियस फंक्शनिंग होती हैं, या कोई पॉलिटिकल फंक्शंस होती हैं, या उस दौरान भी बहुत सारी नॉइज़ मतलब ऐड होती है हमारे इन्वायरमेंट. दिस आल्सो एक्ट्स वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ दिस नॉइज़ पोल्यूशन. इस तरह अगर हम बात करेंगे फेस्टिवल्स पे, हाँ फेस्टिवल्स पे हम क्या करते हैं, मतलब जो ये क्रैकर्स होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, क्रैक दीज मतलब दिस burst these crackers, this bursting of the crackers, this also produces a lot of noise and adds this another source of this. इसी तरह अगर हम बात करेंगे regarding the
regarding the commercial establishments. Commercial establishments, the establishments like hotels, restaurants, like these banks, and these insurance companies, or these uh, cafes. वहाँ पे क्या होता है, they use these मतलब they use the TVs and other gadgets, or other gadgets for attracting and entertaining the customers, and this also adds the noise in our environment, and hence they also act one of the sources of this noise pollution. इस तरह अगर हम बात करेंगे लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स loudspeakers which we use in our religious places, in the religious functions, in the political functions, in the social functions, तो वहाँ पे भी बहुत सारा noise release होता है, and that too is disturbing, and that too disturbs the environment, and it also is one of the sources which adds this sound into our environment. इसी तरह अगर हम बात करेंगे agricultural equipments की, हाँ, एग्रीकल्चर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सपोज वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर्स, वी आर यूजिंग द क्रशर्स, वी आर यूजिंग द थ्रेशर्स, which are using these harvesters. All of them, they are producing this noise, and hence this they are disturbing our environment. They are adding the noise into the environment and creating the annoyance in the human beings. तो दिस इज अनदर सोर्स ऑफ दिस नॉइज पोल्यूशन. इसी तरह अगर हम देखेंगे लॉन मूवर्स, जैसे कि हम लॉन मूवर्स भी यूज करते हैं अपने पार्क्स में टू कट द ग्रासेस, टू लेवल द ग्रासेस, वहाँ पे भी वो शोर निकलता है, वहाँ पे भी नॉइज रिलीज होता है, दैट आल्सो एक्ट्स वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ दिस नॉइज पोल्यूशन. इसी तरह अगर हम बात करेंगे, हाँ, इंडस्ट्रीज, चाहे हम सा मिल्स की बात करेंगे या दीज टेक्सटाइल मिल्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी बहुत या क्रशर्स की बात करेंगे, वहाँ पे भी बहुत नॉइज रिलीज होते हैं, दिस आल्सो एड्स. इस तरह अगर हम बात करेंगे जिस ये जो होते हैं हमारे मतलब बिल्डर्स, जो कि बिल्डिंग पर्पज में हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक बुलडोजर्स करते हैं, रोलर्स, हम मतलब रोड रोलर्स हम इस्तेमाल करते हैं, स्क्रैपर्स हम इस्तेमाल करते हैं, दे ऑल एड द अनवांटेड noise or unwanted sound into our environment, thereby they also act one of the sources of the noise pollution. इसी तरह अगर हम बात करेंगे जिस जो कि डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, डिफेंस मतलब जो कि डिफेंस में यूज़ होते हैं, सोल्जर्स विच आर यूजिंग लाइक दीज आर्टिलरीज, टैंक्स, machine guns, and other explosive materials, and these jets are used, and they all add this unwanted noise into our environment. They also acts one of the sources of this noise pollution. This was regarding the sources of the noise pollution. लेकिन अब तो कुछ हम ये कहेंगे कि मतलब जिसको हम कहेंगे एम्बियंट नॉइज लेवल क्या होती है, एम्बियंट. हाँ, हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल, मतलब जो कि जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने कुछ इकोस्टिक जोन्स मतलब कुछ मतलब रिकमेंड किए हैं कि उन जोन्स में कितनी साउंड की इंटेंसिटी होनी चाहिए. सपोज दे हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 जोन्स. वन इज नोन एज द साइलेंट जोन. साइलेंट जोन में साउंड की लेवल कितनी होनी चाहिए, सपोज 50 ड्यूरिंग डे, 40 डेसिबल ड्यूरिंग नाइट. इसी तरह जो जो रेजिडेंशियल जोन होते हैं, रेजिडेंशियल जोन, रेजिडेंशियल एरियाज में साउंड की इंटेंस डे टाइम के
में कितने होने हैं 55, और नाइट में इट मस्ट बी 45। इसी तरह हम देखेंगे दिस कमर्शियल जोन या कमर्शियल एरियाज में साउंड की डे टाइम इंटेंसिटी होनी चाहिए, विच इज़ रिकमेंडेड बाय दिस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो वो 65 हर्ट्ज होनी चाहिए। इसी तरह रात को 55 होनी चाहिए। इस तरह जो इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है इंडस्ट्रियल, वहाँ पे दिन में इसकी इंटेंसिटी 75 डेसिबल होनी चाहिए। इसी तरह रात को ये 70 डेसिबल होनी चाहिए। दीज आर द वेरियस जोन्स विच हैव बीन recommended by this सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस तरह ये जोनिंग की गई है, विच इज़ बेस्ड हाउ मच दिस intensity of sound is permissible in these various zones. Accordingly, these acoustic zones have been these recommended by this. So this is all about this regarding the sources of the noise, what is noise pollution, and what is noise pollution, and what are the various sources which are adding the noise in our environment. तो इसके बारे में आज हमने बात की। Inshallah, in the next topic we will deal with the causes of the noise pollution and with the effects, with the causes तो हमने पढ़े। We will deal in the next topic with the effects and the control of the noise pollution. So till then, fi amanillah.